and very good morning. So after a very long time I have created this beautiful painting. This is acrylic painting. So I hope you like my effort, and this is looking so beautiful. And I will play the full video and tutorial how long I will take this painting and what is the journey behind this painting. And I hope you enjoy the all process and all step by step. And here is the final result. Very good morning, guys. Let's start new day with new positivity. So आज हम पेंटिंग बनाएंगे. Every painting has their own journey like this one. So basically इस पेंटिंग को कंप्लीट करने में मुझको 1 year लग गए थे. And this is one of the painting that is very close in my heart. And इसका हर एक stroke they are telling their story. So इस पेंटिंग ने winter, summer and monsoon सारे मौसम enjoy किए. Acrylic color that is one of my favorite color, जिसमें मुझे काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. उसकी shine, उसका color, texture, everything is looking so pretty and so beautiful. So now I'm painting, creating lips. भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से this is one of my favorite part, जहाँ पे एक बार माता यशोदा ने कृष्ण का मुख यह देखने के लिए खोला कि उन्होंने मिट्टी खाई है या नहीं. वे भगवान के मुख के भीतर समग्र ब्रह्मांड एवं अपने आप को देखकर चकित रह गई थी. सो आई लव दिस पार्ट एंड आई वांटेड टू क्रिएट दिस एंड आई हैव डन दिस वेरी ब्यूटीफुली एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू. I hope you are enjoying my every step what I am doing, and I am painting Balram ji, Yashoda Maiya, Krishna ji. After a very long time, so this is the winter time and I just using my brush and जितने भी यहाँ पे थोड़ा बहुत धूल वगैरह लगा था I'm just cleaning up and for starting, actually for restarting. So yeah, this is how I am started at my room and this is my final. जब तक ये complete नहीं होगा I have continued in this winter. थैंक यू सो मच द ऑल व्यूवर्स जो ये वीडियो एंजॉय कर रहे हैं एंड फॉर दोज हु इज विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय यूट्यूब चैनल एंड वाचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम. सो वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर देम कि ऑलरेडी मैंने कृष्ण एंड राधा जी का एक्रेलिक पेंटिंग मैंने क्रिएट किया था. And if you want to watch that video as well, so I will give the link in my descriptions, so you can visit and watch that video as well. So that painting is also super nice and very beautiful. Thank you.